हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. नेम द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. तो इस क्वेश्चन में अनोमलस बिहेवियर की बात की गई है. सो द की कॉन्सेप्ट विल बी, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज anomalous behavior of lithium. Whereas anomalous का मतलब होता है different from normal. जो लिथियम है that is present in the first group elements and जो उसके साथ के elements होते हैं these are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. These are the first group elements and जो लिथियम है अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बिकॉज जो हमारे पास लिथियम है that have only 3 electrons and these 3 electrons are present as जो फर्स्ट शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड द सेकंड शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ड्यू टू ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स जो लिथियम का साइज होता है that is very small and when we move further then the number of shell increases and the size of the atomic radius increases for the other elements present in the group. So due to this हम कह सकते हैं जो लिथियम है उसका जो साइज है that is very small. So first will be small size of lithium. And the next is high electronegativity. And electronegativity is to attract the shared pair of electrons. Let us write जो electronegativity होती है, electronegativity का मतलब होता है it is tendency of an atom of a given element to attract shared pair of electrons. To attract shared pair of electrons. So this is the basic definition for the electronegativity. And जो electronegativity of lithium होती है that is very high because of its small size and it can attract a shared pair of electrons good as compared to the other atoms. क्योंकि जो दूसरे atoms होंगे, दूसरे elements होंगे हमारे पास, उन elements में एक एक shell increase होता जाएगा तो tendency to attract the shared pair of electrons will be decreased. So the point number 2 is electronegativity is very high. Electronegativity is high. Now the next point is about ionization enthalpy. So let us see कि ionization enthalpy क्या होता है. Ionization enthalpy, we can write energy required to remove loosely bound electron from outermost shell. And we can see जो lithium है हमारे पास, जो उसका outermost shell है that is very close to the nucleus and due to this
जो लिथियम है अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लॉस नहीं करता, क्योंकि it has a great internuclear forces between the electrons of the last shell and the nucleus. So the third point will be high ionization enthalpy. So these are the some factors which are responsible for the anomalous behavior of lithium. And this is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.